I'm sad, depressed. You know, I feel like a loser. My parents don't love me anymore. I don't have money, don't have friends. You think you're a loser just because you don't have this money. You're falling into these drugs, you're falling into these addictions. तुम जिस शैतान की बात को सुनना चाहते हो, तुम उसकी वसवसों को सुन रहे हो और तुम उसी के चक्कर में अल्लाह सुब्हानो तआला की नाफरमानी करते हो. Your life success is based on how much you connect with Allah subhanahu wa ta'ala, how much you invest in the akhirah. Your identity is not based on your clothes, the branded wear that तुम इस्तेमाल करते हो. Your life is about a meaning. You will never be successful if you don't connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why you need to understand कि इन गुनाहों में पड़ना, इन चीज़ों में पड़ना, these pills, these drugs, this money, this is all a temporary thing. That this is why Allah subhanahu wa ta'ala says, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. That this world is all about pride, play, just deception और आपस में फख्र का ज़रिया. This world is temporary. What is going to remain is what you invest in the hereafter. And if you're not going to do that, you're going to be more sad. You're going to be more upset. You think about killing yourself. You talk about your parents not understanding you. Your parents have done so much for you. They are willing to give their life for you. And just because they are not able to provide you with the latest gadgets, तुम्हें समझता है तुमसे वो मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें वो समझते नहीं हैं. Understand that you need to be able to have good company. Because the Prophet ﷺ said that a person is upon the religion of his friend, and you will be upon the right path if they guide you towards the right path. And if you're going to hang out with bad people and people with bad habits, they will call you towards bad things, which is actually going to be able to make you more depressed. So understand that this life has more meaning. You have to achieve so much in the limited time that you have. You're not just going to throw it away by these games, by all these elements. You have to bring more meaning in your life, and that is when your life is going to be happy. %70% इस पॉपुलेशन की हमारी यूथ है, और सैडली वो किसी न किसी तरह की ड्रग्स या एडिक्शन में इन्वॉल्व है. 13 या 12 साल के बच्चे ने किसी न किसी तरह की ड्रग्स को ट्राई किया हुआ है, और 14 से 15 की बहुत बड़ी तादाद है जो एडिक्टेड हैं किसी न किसी फॉर्म ऑफ एडिक्शन के. हमें अपनी यूथ को गाइड करने की ज़रूरत है, उनको एडवाइस करने की ज़रूरत है. पेरेंट्स नीड टू नॉट प्रेशराइज देयर किड्स विथ सर्टन थिंग्स जो मायने नहीं रखते. हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि उनकी असल कामयाबी किस चीज़ में है, कि उनकी कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात मानने में है और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात में चलने में है. उनकी दुनिया भी बन जाएगी, उनकी आखिरत भी बन जाएगी. अदरवाइज दे विल कीप ऑन फॉलिंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस. दे विल कीप ऑन फॉलिंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स. एंड इफ़ यू वोंट गाइड देम, अगर हम उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो ये वो कीमत है जिसकी प्राइस हम कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे.